তো এই দুটো টিজারও দেখার জন্য আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছে অ্যান্ড কমেন্টে এসেছিল এই দুটো টিজারও দেখার জন্য। তো চলো দেখা যাক মার্কোর ফ্যামিলি টিজার এবং অ্যাকশন টিজারটা। হ্যাঁ চলো। তো প্রথমে কোনটা দেখবে? প্রথম ফ্যামিলি টিজার। তো চলো দেখা যাক മാർക്കോർ ഫാമിലി ടീസർ. യുദ്ധത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് ശരിക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ബാബാരേ, കൊല്ലാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. വളരെ ക്രൂവലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാം. നമ്മളിത് കണ്ടെത്തും. ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത ആരാണ്? വിക്ടർ എന്റെ ചോരയാണ്. അവൻ എന്റെ കൂടെ പുറപ്പാണ്. ഇവിടെയുള്ളവരൊക്കെ നിന്നെ വെറും അന്യനായി കണ്ട് ഒഴിവാക്കുക. മാർക്കോ, നിന്നെ ഈ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യം. അവന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചെയ്യും. കുടുംബത്തിനെതിരെ ആര് നിന്നാലും തീർത്തേക്കാം. അത് പുറത്തുനിന്നാണെങ്കിലും കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും. അടാട്ട് കയറി ജോർജിന്റെ തടി കേടാക്കാൻ പറ്റിയ മിടുക്കന്മാരും ഈ അങ്ങാടിയിലില്ല. It is not that easy, John. If they are there to murder a business tycoon's brother, then their mind should be brutal and sharp. യുദ്ധത്തിനാണെങ്കിലും സമാധാനത്തിനാണെങ്കിലും ജോർജിനൊപ്പം മാർക്കുണ്ട്. এটা কেমন লাগলো বলো? এটা দেখে আমার ভালো লাগলো। এটা পুরোটা দেখলে আরো ভালো করে বুঝতে পারবে। এটা যতদূর দেখে বুঝতে পারলাম যে এটা একটা সিরিয়াস একটা সিনেমা, এটার মধ্যে অনেক কিছু রহস্য আছে, একটা স্টোরি আছে। এই যে আজকে মার্কো যে জন্য আজকে ফাইটটা করছে, যে ক্যারেক্টারটা, তো কেন করছে, কিসের জন্য করছে, তার একটা হালকা ফ্ল্যাশব্যাক, একটা কোনো ফ্যামিলি ঘটিত কোনো কারণ হতে পারে, বা ফ্যামিলি বিজনেস ঘটিত কোনো কারণ হতে পারে, যার ফলে এই জিনিসটা করছে। মেবি আমার দেখে মনে হলো। এটা আমরা হিন্দি ট্রেলারটা খুঁজে পেলাম না। আই থিঙ্ক এটা হিন্দিতে এখনও ফ্যামিলি ট্রেলারটা বেরোয়নি। তো ফ্যামিলি ট্রেলারটা হিন্দিতে বেরোলে আমরা বুঝতে পারবো যে ঠিক এক্স্যাক্টলি কি স্টোরিটা বা কীরকম স্টোরিটা হতে পারে। হ্যাঁ, তো এই ছিল আমাদের মার্কো ফ্যামিলি টিজারের রিয়াকশন।